Okay, fine. So Good morning. Good morning. Good morning. So yesterday I completed up to, I think, 6th question. So let us see 7th question. It is 0 to pi x tan x upon sec x plus cos x. So what we will do? We know we have a simple property 0 to a f of x dx. Then we will do 0 to a f of a minus x dx. Okay. Based on this property, we are going to solve this one. So here it will be 0 to pi. Assume this as a I only. 0 to pi, and in place of x we have to write pi minus x tan x, tan pi minus x. Here it will be sec pi minus x plus cos pi minus x dx. Okay. Next 0 to pi. Here it will be pi minus x. Now tan pi minus x, it will give negative. Okay. So minus 10 x. Next, here see sec pi minus x. Sec pi minus x. Negative value will be here. And here cos pi minus x. This is also negative. So overall negative will be here. Therefore it will be sec x plus cos x. Both negative sign will be cancelled out. So remaining will be only 0 to pi and pi minus x tan x upon sec x plus cos x dx. Now we will separate the integration from here. So 0 to pi, we can write it pi tan x upon sec x plus cos x and minus x tan x upon sec x plus cos x dx. Now see, it is coming what? Up to here it is I. Now what is this? Once again please see what is this. If we separate the limit, here it is 0 to pi. This is also what? This is also I. So when it will come LHS, that will become 2I equal to 0 to pi, and then here pi tan x upon sec x plus cos x. Okay. Next 2I equal to, now this pi will be outside here, this pi will be out of the limit. So pi into 0 to pi tan x upon sec x plus cos x. Okay. Now what I will do, I will convert this all in the form of sin x cos x. This is equal to pi 0 to pi tan x equal to sin x by cos x. So I will write here sin x. Remember in denominator, just remember in mind that in denominator cos x is there. Again here sec x. So I will write 1 upon cos x. So here will be cos square x. Okay, dx. So up to here you have understood. Now see, अब हमें एक क्लू मिल गया. क्या क्लू मिल गया कि अगर हम इसे t मानते हैं
इस cos x को अगर t मारेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, पुट cos x equal to t, therefore what I will get, minus sin x dx equal to dt, therefore sin x dx equal to minus dt. नाउ तो लिमिट चेक करना है, ठीक है। तो लिमिट चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या आ जाएगा, 1। सो लिमिट 1 से कहाँ तक जाएगा, एक बार पाई रखेंगे तो क्या आएगा, -1. So the limit is changing from 1 to -1 here. Okay. So same question will be pi limit changing from 1 to -1, 1 to -1. Sin x dx equal to minus dt, keep minus outside. Sorry, it will be outside here. Wait. ये हमें माइनस यहाँ लिखना है. So sin x dx, it will be dt here. Now see the denominator is 1 plus cos square x. So 1 plus cos x की जगह पे क्या माना हमने, t. So it will be t square. Okay. अब ये किसका फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है, किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan inverse. yes. So this is, so what we'll do, equal to minus pi, keep minus pi outside, and now here it will be 1 by a, 1 by a. So 1 by a is what is my a is 1 here. So we will write here tan inverse x by a. What is x? X is t only. So now limit is 1 to -1. Now I will substitute here minus pi tan inverse so now see here it will be minus pi tan inverse. So here it will be tan inverse -1 and minus tan inverse 1, okay, equal to minus pi tan inverse -1. When it is -1, tell me, ये -1 कब होगा, Minus pi by 4. minus pi by 4. Okay, so we'll write here minus pi by 4. Okay, then minus tan inverse 1, again here pi by 4. Okay, so minus pi by 4 and minus pi by 4, what we'll get, minus 2 pi by 4. So remaining it is minus pi by 2, and outside also minus is there. Okay, so what it will become, it is here my pi square by 2. Now see LHS side here 2i was coming, so it is 2i equal to pi square by 2 here, therefore here I equal to pi square by 4. Please take a screenshot. I will move to another question.
Okay, so hope you have taken a screenshot. So I'll move to next question. Next question, see, it was logically based. Is question 8. Given -1 to 4 f of x dx equal to, ये कुछ दिया हुआ था शायद, how much it was? 4. This is equal to 4 given, and what is given? Let me see the question. Yes, and -2 to 4. How many of you have solved this question? This is very easy question. 3 minus f of x. शुभम वनगर बनाया था क्या तू? Equal to 7. Then find 2 minus 1 f of x dx. ये है क्वेश्चन. ठीक है. हाँ, yes, tell me what? क्वेश्चन यही था ना, -1 to 4 f of x dx. 2 to 4. Oh, sorry, this one you are telling. 2 to 4, 3 minus f of x dx equal to 7. Find 2 minus 1 f of x dx. Yes, this only, no? So, see the solution here. This is 2 here. So, we just start from here. See, it is -1 to 4 f of x dx. It can be written as -1 to. Limit is broken here. See, 2 minus 1. Okay, and here is, sorry, see here 2 to 4. So what I will do, -1 to 2 f of x dx plus, here I will write 2 to 4 f of x. Okay, 2 to 4 f of x dx. Now see here, this term only, see, it is given, just right here, give this equation as a 1. It is given that not minus, 2 to 4, 3 minus f of x dx equal to 7 is given. Now separately we will solve it here. So this will become what here? Here it is 3 dx minus 2 to 4 f of x dx equal to 7. Now here what we will get? Here we will get 3 x 2 to 4, because 3 will be outside and here will be dx. So integration of dx will be x. Now minus 2 to 4 f of x dx equal to 7. Next I have to find this value because we require here, see. So what I will do, this here how much will get? 4 minus 2 equal to 2, and 3 into 2, 6. 6. So 6 will get, and then
6 minus 7. 6 minus 7 equal to -1. And -1, this is, so we'll get here 1 only. -1 will get. Okay. See here. What I will do, here we got 6 minus 7 equal to, can I write it like this, 2 to 4 f of x dx. Is it right? So here -1 will get this value. Yes, sir. This value we got कितना मिला मुझे, -1 मिला. अब ये -1 हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट. सो विल राइट हियर पुटिंग इन 1, तो क्या आ जाएगा, और फिर हम पुटिंग इन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी, सी इसका वैल्यू इधर क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 4, तो क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू, ये वैल्यू पूछ रहा है हमें, ये वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, एक्चुअली क्या है ये, सी हियर, यहाँ पे लिमिट रिवर्स किया हुआ है, तो हम लिमिट रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 to -1 होगा. एफ ऑफ एक्स ए प्रॉपर्टी है हमारा, ये हो सकता है ना. ओके, सो हियर -1. अब ये -1 क्या होगा, हम इसको LHS साइड लेकर के आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू -2 to -1 f of x dx. अब हमें ये पूछ रहा है, तो माइनस को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू 2 to -1 f of x dx. So -5 is the correct option. Okay, take a screenshot. We'll move to next question. Next question. Integration 0 to 1 dx x square plus 2x cos alpha plus 1. ठीक है, यहाँ पे कोई भी पकड़ सकता है कि यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस b स्क्वायर करना होगा हमें. ठीक है, तो सेम थिंग वी विल डू हियर 0 to 1 dx upon, you can see here, x square plus 2ab हमें दिखाई दे रहा है, cos अल्फा है तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस क्या होगा b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर अल्फा. अब हमने एक्स्ट्रा cos स्क्वायर अल्फा यूज किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस cos square alpha we will use, and then plus 1 already is there. Okay, so my next step will be to rewrite this in proper form. So dx upon, here to here we will get x plus cos alpha का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा. ओके, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा. So here it will be x plus cos alpha का whole square and then plus sin square alpha. अब ये अल्फा है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है,
तो फिर से किस फॉर्म में आ गया हमारा, एनीवन? किस फॉर्म में आया? Again, it is of the, since it is of the form integration dx upon x square plus a square, because this is linear. Okay, so therefore we can write here 0 to 1, ये क्या होता है, equal to 1 by a tan inverse x by a. So what is 1 by a? What is my a? This is a. So we will write here 1 by sine alpha and tan inverse x. My x is x plus cos alpha upon a. A is again here sine alpha. Okay, so I will write here this is equal to 0 to 1 upon sine alpha. Okay, tan inverse x plus cos alpha upon sine alpha dx. Now tell me what to do. We have the formula. See, there is a formula tan inverse a by b, tan inverse a by b is equal to tan inverse a minus tan inverse b. This is one formula, or else we will not apply this formula here. Directly what we will do, we will substitute the, because see 1 by sin alpha is outside. 1 by, already we got the, we have already integrated. Here we have already integrated. So what I will do, ये 1 by sin alpha को बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ये लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है फिर से, ठीक है. So here also we should not write this limit. So 1 by sin alpha, here we will write tan inverse x plus cos alpha upon sin alpha. यहाँ पे सिर्फ हमें लिमिट पुट करने का जरूरत है. लिमिट इज 0 to 1. So what I will do, next 1 upon sin alpha. देखो जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, here we will get tan inverse 1 plus cos alpha upon sin alpha. Okay, माइनस 0 पुट करने पे क्या आएगा, tan inverse cos alpha upon sin alpha. Okay, okay, now 1 upon sin alpha. Now see 1 plus cos alpha. So 1 plus cos alpha is equal to what? 1 plus cos alpha, 1 plus cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो 1 plus cos alpha क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर alpha by 2. Cos square alpha by 2. Alpha by 2. So it will be here 2 cos square alpha by 2. Here now sin alpha we can write 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. Okay, ये पूरा एक ब्रैकेट में आया. ओके, उसके बाद जैसे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, बाकी इंटीग्रेशन तो हमारा हो चुका है. ठीक है, ये tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट विल राइट cot अल्फा. ठीक है, हम और भी सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं इसको, sin अल्फा tan inverse now 2, see 2 and 2 will be cancelled out, and here, so here directly we will get
cot alpha by 2 minus here tan inverse. yes cot alpha को हम क्या लिख सकते हैं, tan pi by 2 minus alpha लिख सकते हैं ना. So similarly 1 by sin alpha, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan inverse tan pi by 2 minus alpha by 2 will do. So here remaining what I will get, here I will get here alpha by 2 is there. Okay, तो क्या मिलेगा मुझे, here pi by 2 minus alpha by 2 will do here. So what will get here, once again here will get pi by 2 minus alpha by 2, and then here also same thing, minus sign is there, so minus pi by 2, and here we will get plus alpha. So after solving, see pi by 2 and minus pi by 2 will get cancel out, and alpha minus alpha by 2 plus alpha, so remaining is what, alpha by 2, so equal to 1 by sin alpha into alpha by 2. So this is equal to alpha by 2 sin alpha. So this is the correct option. Please take a screenshot. Okay, so I'll move to next question. Next question. Yeah, next question देखते हैं. Next question is integration of integration from limit 1 to e 1 plus x square ln x upon x plus x square ln x. ठीक है, ये है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एल एन एक्स तो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है. सो व्हाट आई विल डू, हमने एक बताया था मैनिपुलेशन करके कुछ. सो सेम थिंग व्हाट आई विल डू हियर, here we will do manipulation. Here dx is there obviously, so 1 to e, here I will write 1 plus x square ln x plus x minus x. I will do, I will just manipulate it. So x plus x square ln x dx equal to 1 to e. Now these two term I will write together. So what is, therefore I will get here only dx when we will separate it, plus 1 to e. What is the remaining term is, remaining term is 1 minus x. So 1 minus x upon x plus x square ln. All of you understood this step? ये पहला वाला कैसे आया, समझ में आया सबको? ये जो यहाँ पे हमने dx लिखा, कैसे आया dx से? 1 प्लस सॉरी x प्लस एक्स स्क्वायर ln x को हमने सेपरेट किया, और डिनोमिनेटर में भी x प्लस एक्स स्क्वायर ln x था, दोनों कैंसल आउट हो गए. सो रिमेनिंग इज dx ओनली. ठीक है, यहाँ पे dx है. Now for if you assume this as I1 and this as I2, so I1 हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, I1 will get e minus 1. So remember this, I1 is e minus 1. Now we have to solve only I2. I2 equal to, sorry, 1 to e 1 minus x upon x plus x square ln x equal to, remember we are solving I2, so
what I will do here, see ln x है हमारे पास, लेकिन इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं दिया हो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ताकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स आ जाए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by x square. Okay, so what I will do, 1 to e 1 x स्क्वायर डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, सो x बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस ln x dx। अब देखो हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो हमें इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिला। 1 बाई एक्स का क्या होगा, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, टेक माइनस साइन 1 टू e, सो माइनस आउटसाइड निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वेट दिस इज नॉट a स्क्वायर हियर, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 बाई, और वी कैन राइट ln x प्लस 1 बाई एक्स dx। अब इसको अगर t अज्यूम कर लेंगे तो dt हमारा ऊपर दिया हुआ है, सो पुट ln x plus 1 by x equal to t, so ln x है, so 1 by x minus 1 by x square dx equal to dt हो गया। now we have to see the integration also here, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया है, so what क्या हुआ ये देखो यहाँ पे, okay, so जब x 1 हो, जब x 1 हो तो ln 1 here 0 and 1, so t standing from 1 तो करेक्ट है। नेक्स्ट जब x क्या हो e, so ln e and 1 by e, ln e is 1, so it is changing from 1 plus 1 by e। अभी देखो लिमिट देखो कैसा आ गया, थोड़ा अटपटान सा लिमिट आ गया है, 1 to 1 plus 1 by e, ठीक है, ऐसा आ गया। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, आई थिंक ओनली dt is remaining, am I right? Let me check first। हाँ सिर्फ dt बचा है ना हमारे पास से, our main integration is this one, so remaining is only dt, so dt is there, Sir, dt by t. dt by t, oh sorry, dt by t, thank you very much। so we will integration what we will get, ln t, now substitute the limit 1 to 1 plus 1 by e, now 1 by 1 substitute, so what we will get here, ln 1 plus 1 by e minus see here ln 1, that is 0 we know, so here will be ln 1 plus e and minus ln e, yes or no, this one ये तो 0 हो गया, इसको हमने क्या किया एलसीएम लिया यहाँ पे, सो 1 plus e अपॉन e, तो log a by b का फॉर्मूला यूज किया हमने, इतना आया हमारे पास, ठीक है, ओके। I2 मिल गया, अब I1 क्या था हमारा, I1 था e minus 1, e minus 1 was my, और ln e क्या होगा यहाँ पे, ln e will be 1, so now therefore I1 equal to, sorry, I equal to I1 plus I2, I1 is my e minus 1 plus I2 is ln into 1 plus e
एंड माइनस ln e, सो माइनस ln e कितना था, -1 है हमारा। अब ये -1 और ये -1, e -1 here, e -1, is it minus or something? What, let me check it. कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा कहीं पे? एनी साइन प्रॉब्लम? ln equal to 1. Yes, see here, minus sign was there. See here, this minus sign, this here, see minus sign was outside. Okay, so उसके वजह से क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, this will be plus and this will be minus, understood? तो ये प्लस हुआ, ये माइनस है, so क्या होगा, ये this 1 and -1 will get cancelled, so remaining is e minus ln 1 plus e, and this is the correct option. So next question we'll see. It is th as per my numbering, 0 to 1 by root 3, 0 to 1 by root 3, and dx upon 1 plus x square under root 1 minus x square. So I will just finish this question, then you can go, because you have further classes. So what I will do here, see यहाँ पे if you substitute this as a t square, कुछ भी करो, ये I will just give you a hint for this question. Okay, so take it this as a homework.